Welcome everyone to this live session on Learn to Trade Nifty Successfully. Myself, Amardev Singh from Angel One, head advisory. मैं इस सेशन को both हिंदी और इंग्लिश में रखूंगा जितने भी important points हैं. I'll be covering both in English and Hindi for the betterment of everyone. So if you look at coming to Nifty, so Nifty is called Nifty 50. Now, Nifty 50 means that there are 50 stocks which are there in Nifty. And you will find that all the stocks are not equal, meaning जितने भी stocks हैं Nifty 50 में सबको equal weightage नहीं है. तो कुछ stocks हैं उनको ज़्यादा weightage है. For example, Reliance is there, HDFC Twins है. So like HDFC Bank, HDFC. Now there will be the merger is happening. Then it will become one entity. But till such time, then you have Infosys, ICICI Bank, TCS, Kotak. तो ये सब जो 6-7 stocks हैं in the Nifty 50, they have close to 40-45% weightage. तो ये stocks कैसा करते हैं उसका Nifty पे बहुत असर होता है. तो how these 7-8 stocks behave, ना they can tell you a lot about how Nifty is going to behave. So that's something which you can do. So if you want to really trade Nifty well, then looking at these stocks also will give you a good idea. Means it will. There are ऐसा नहीं है कि Reliance गिर रहा है और market नहीं बढ़ता है, but then that doesn't happen very often. So the point that I'm trying to say is if you keep a watch, इसमें क्या you don't need to keep an intraday watch or an every hour watch. यदि आप daily trend की देखते हैं इस 7-8 stocks का और Nifty का, तो it gives you a different perspective altogether when you are trading Nifty. तो ये Nifty constituents है, ये weightages जो है they keep on changing. तो कभी 9.63 का 9.9 हो जाए, 10 हो जाए, तो this keeps on changing, but that is not of that great a significance है कि कौन से वो stocks हैं, 7-8 stocks हैं जो major stocks हैं, जिसका major impact Nifty पे पड़ता है. तो stocks यही है, they don't change. It is Kotak Mahindra Bank, it is TCS, it is Infosys, it is ICICI Bank, HDFC Bank, HDFC and Reliance. ये सब 7-8 जो stocks हैं, they are very crucial. So this is something which you can keep in mind. Let's say, for example, if you are trading Bank Nifty, so Bank Nifty where you have HDFC Bank is there, ICICI Bank is there, Kotak Mahindra Bank is there, SBI is there, Axis is there, and IndusInd is there. तो ये सब 5-6 banks को यदि आप स्टडी अच्छे से करते हैं तो you can trade Bank Nifty even better. Just one second. Yeah. So now I will come to this important part, which is the Pareto principle 80-20. Means क्या है कि जैसे ना, for example, many people you will find who are trading actively, वो क्या सिर्फ technicals और derivatives data पे ही follow करते रहे. So वो उस पे time spend करेंगे. But it is like this. If you can see, stool is there. So it's a stool. It has got 3 legs, 1, 2, and 3. All the 3 are very important. एक भी छोटा बड़ा हो तो the stool will fall. So what are those 3 in trading? One is your mind, second is your money, and third is your method. तो mind is your psychology. तो आप कैसा सोचते हैं मार्केट्स के बारे में, कैसा लाइफ के बारे में सोचते हैं, how you manage your risk, they become very important. तो आपका जो माइंड है, सोचने का तरीका है, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस एज अ ट्रेडर. तो इसकी वेटेज 50% है. नेक्स्ट इज 30% वेटेज इज योर मनी मैनेजमेंट. हाउ यू मैनेज योर प्रॉफिट्स, हाउ यू मैनेज योर लॉसेस. तो लूजिंग ट्रेड्स को कैसे आप मैनेज करते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग इन निफ्टी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस और ट्रेडिंग इन स्टॉक्स. इट इज इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग. मतलब यदि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस. सिंपल. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव दीस 3 मतलब लेग्स ऑफ द स्टूल. तो एक भी छोटा है तो स्टूल विल नॉट स्टैंड. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर यू हैव टू पे अटेंशन ऑन हाउ यू थिंक. उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है. मनी मैनेजमेंट एंड साउंड ट्रेडिंग सिस्टम. देयर ट्रेडिंग सिस्टम व्हेन आई एम टॉकिंग इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है ना, यदि आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो उसमें फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में काम.
तो लेकिन मार्केट्स तो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड मूव हो रहा है. So that is something more than fundamental. So that is the emotions, that is the sentiments. Those things are there which are important. So they will that's something just one. Yeah. So the point here is that your system जो है ना, तो technical analysis can help you understand, because markets में it's a lot of sentiments, a lot of emotions which are there in the market during the day. तो वो आपको काफी help कर देता है technical. So हम लोग technical strategy की बात करेंगे, कैसे आप use कर सकते हैं. We look at today's market as well. So trading you have to understand. थोड़ा सा मैं I'll take 5 minutes here. This is something very important and interesting. So trading is like a battle. मतलब you cannot take it lightly. मतलब जैसे suppose you are walking in the garden or in the park, so you are at ease. But market is not like that. The market is not a park wherein you can be means at ease. Market, you have to understand, it is like a battlefield. And so when it is a battlefield, you have to be alert. You have to be alert all the time. So you can't be drunk. You have to be rather sober. You have to be alert. So markets, so discipline is very important in markets. Because markets में are you can do anything. Because markets कोई external controls नहीं, आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं market में. The other important thing is कि it's okay to make mistakes. गलती करने में या गलत ट्रेड डालने में कोई इशू नहीं है. You should never beat yourself up. अरे मुझसे गलती हो गई, मेरा ये लॉस हो गया, वैसे नहीं सोचना. You have to take trading as a business. यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो you take risk. तो रिस्क क्या होता है? एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है. एक होता है blind risk. Never take blind risk in markets or in anything in life. Always do a calculated risk, and also ensure कि you don't take such a big risk कि वो आपका capital को ही wipe out करे. तो उसके लिए जो है तो and we all make mistakes. ट्रेड्स गलत जाएंगे, but it's okay. But repeat मत कीजिए same mistake को again and again. तो second part जो आता है, जो पहले मैंने mind कहा, जो winning psychology है, तो उस पे काम कीजिए. जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं, don't trade that day. जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं, don't trade that day. जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उस दिन trade, you don't trade that day, because that day you are likely to be more emotional. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाई फीवर, और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा मेरा माइंडसेट? तो सही रहेगा ही नहीं, तो मैं गलत ही ट्रेड करूंगा. इसीलिए अब you have to understand it is your money, and if you lose the money, who will feel the most pain? You will feel the most pain. Why to take it lightly? So markets and trading and in all investing, they are not supposed to be taken lightly. तो सेकंड पार्ट पे मैं आ जाता हूँ मनी मैनेजमेंट. मनी मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट. ये विनर्स और लूजर्स को सेपरेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल यू सी दिस पिक्चर हियर. So this person has fallen from a top and he has a safety net. तो बच गई उसकी जान. ये सेफ्टी नेट नहीं रहता, he would have died. So money management is what separates winners from losers. What tells you how much to buy? What tells you maximum possible risk that you can take? And what helps you survive in the game in the long run? That is a safety net. इसका just one example we'll take, and then we'll come to the method. कि निफ्टी मुझे ट्रेड करना है तो क्या मेथड है, how to use and all that will come. Now suppose for example I have got 1 lakh rupees and I want to trade Nifty options. So suppose the Nifty option is available at 100 rupees. So the lot size is 50. So I have to pay 5,000 to buy that option. Now what I can do, I have 1 lakh rupees. I will buy 20 lots. तो मैंने क्या किया, 5,000 into 20, 1 lakh पूरा का risk ले. That is the most foolish thing to do. That one should never do. First. तो अब सवाल उठता है कि when you are, suppose for example, you are buying an option worth 5,000. So you will also have to get out if the move goes against you. Options if you are trading, you should not hold till the expiry. अरे नहीं, weekly expiry तक देखता हूँ ना क्या होता है, या monthly expiry तक देखता हूँ क्या ना होता है. You should never do that. If you are buying options, you have to remember time is your enemy. जो समय है वो आपका दुश्मन, and it is a friend of the option seller. तो आप ऑप्शन बाय करते हो, जितना जल्दी आप निकल सकते हो ऑप्शन से, the better off you are in option buy. यही प्रॉब्लम मेजॉरिटी जो लोग ऑप्शन बाइंग में रहते हैं, वो उसको एक्सपायरिंग का होल्ड करते हैं. अरे कभी मेरा भाव आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये हो जाएगा. बट दे डोंट रियलाइज कि एवरी सेकंड द ऑप्शन इज अ डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट. तो एवरी सेकंड ऑप्शन की वैल्यू घट रही है. तो इसलिए आप ऑप्शन बाइंग में जल्दी निकलिए. उसमें टेक्निकल्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है. टाइम द मार्केट हम लोग देखेंगे कैसे, दैट आल्सो आई विल शो यू. तो ये एक सेफ्टी नेट है. तो आपको, तो आप जस्ट कमिंग टू एग्जांपल, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है,
तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने 5,000 का एक ऑप्शन लिया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ठीक है 100 रुपए का वो ऑप्शन था जिसका प्रीमियम था, मल्टीप्लाई बाय 50 तो 5,000 हुआ। तो क्या मैं 100 रुपया पूरा लॉस का इंतजार करूं, या मैं 50 के नीचे हो तो मैं चला जाऊं? सपोज मैं आई थिंक 50 रुपीज इज माई लॉस, सो 50 इंटू 50 2,500 का लॉस होगा, आई विल बी आउट ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन में जब भी स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो कभी ऑप्शन पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जो अंडरलाइन मतलब मैं निफ्टी कैश या निफ्टी फ्यूचर्स का जब लेवल टूटेगा तब मैं अपने ऑप्शन से एग्जिट करूँ, मोर और लेस। तो सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि 50 रुपीज का ऑप्शन का रिस्क है, तो 2500 में रिस्क लूंगा। तो जैसे मेरा 5,000 का 2500 हुआ, मैं एग्जिट कर लूंगा, तो मेरे पूरे कैपिटल 1 लाख का 2500 कितना हुआ? 2.5%। ये चलेगा। 2% से 3% से ज्यादा का रिस्क कभी भी एक ट्रेड में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि लाख रुपया तो मैं 10 लॉट ले लूँ, 20 लॉट ले लूँ, यू आर प्लेइंग पुशिंग योर लक। तो लक आपके कभी फेवर में है तो फिर बल्ले बल्ले, अब लक आपके फेवर में नहीं है, then you'll then get angry or upset about it. So that's something which you need to understand. Now coming to the method. So method is suppose how exactly to trade. So method में क्या है, technical analysis ना is a very good tool which can really help you understand because it is an X-ray of the market. जैसे आप एक्सरे करवाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, यू हैव एन एक्सरे, वो सपोज बोन में क्रैक है तो एक्सरे कर लेगा, देख लेगा, चेस्ट एक्सरे व्हाटएवर। या फिर ईसीजी होता है, ईसीजी इज अबाउट द हार्ट की हार्ट इज हाउ इज हार्ट फंक्शनिंग एंड ऑल दैट रिपोर्ट। उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट्स है, दे आर एन एक्सरे ऑफ द मार्केट बिकॉज दे स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी। और जो मास साइकोलॉजी मतलब लोग जब एक साथ रहते हैं तो दैट साइकोलॉजी डज नॉट चेंज। एंड इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्राइमरली प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट है। और क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी सदियों से नहीं बदली है, तो इट विल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वैसे ही बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर 3 इमोशंस ड्राइवर, दैट इज फियर, ग्रीड एंड होप। उसमें भी फियर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। तो अब क्या आ जाते हैं कि टेक्निकल्स। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल्स में यदि आप इंट्राडे, हम लोग जैसे निफ्टी की बात करेंगे तो हमें वहां वीकली चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेली चार्ट देख के, एक बार वो मैं समझाता हूँ, डेली चार्ट देख के आप यू गेट अ व्यू, यू गेट एन आइडिया। उसके बाद आवरली 15 मिनट्स, 5 मिनट्स ये सब आप देख सकते हैं। यदि आप डेली इंट्राडे कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग कहते हैं उसे। यदि आप आवरली चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यदि आप डेली चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। और लॉन्ग टर्म, वीकली और मंथली के हिसाब से ट्रेड करें, इसका मतलब आप इन्वेस्टिंग करें, लंबे समय के लिए पोजीशन होल्ड करें। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी ट्रेडिंग। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी इज वेरी लिक्विड। तो इसमें आप 5 मिनट्स के चार्ट देख सकते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि देयर आर मेनी पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस आर देयर। तो मूविंग एवरेजेस आर वेरी वेरी पावरफुल। तो यदि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है तो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल इज वेरी गुड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो 100, 200 इज वेरी गुड। MACD you can use parameters 12, 26, 9. That's a default parameter. That's the one you should use. ये जेराल्ड एपल एक अमेरिकन ने इसे डेवलप किया था। फिर ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए आप RSI स्टोचैस्टिक्स में से कुछ यूज कर सकते हैं। स्टोचैस्टिक्स इज मोर स्मूदर एज कंपेयर्ड टू RSI. The other is open range breakout. Open range breakout important concept है. I'll just take a minute here. मतलब क्या कि मार्केट जब ओपन होता है 9:15 बजे, आप जल्दबाजी में मत रहिए कि नहीं मुझे 9:16 पे ट्रेड लेना है, 9:17 पे ट्रेड लेना है। लेट द मार्केट सेटल डाउन फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। कोई ट्रेन ऐसी नहीं है कि भागी जा रही है कि आप वो ट्रेन पकड़ नहीं सकते, वो ट्रेन वहीं रुकेगी कुछ समय। तो फर्स्ट 15 मिनट्स अवॉइड ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड अनलेस यू हैव अ वेरी वैलिड एंड स्ट्रांग रीजन। क्योंकि बहुत बार मार्केट का टॉप मतलब मार्केट का हाई और मार्केट का लो पहले 15 मिनट में बन जाता है, और उस लोगों को फंसाने के लिए मतलब मार्केट, इफ द मार्केट हैज टू करेक्ट आल्सो, मार्केट विल ओपन विद एन अप गैप, trap all the buyers then and then the market will start correcting. ये समझना बहुत जरूरी है। Don't be in a hurry to trade and don't rush after the trade. मतलब कोई ट्रेड होता है ना कि भाग रहा है, आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो that is a wrong because you are trading emotionally. तो पूरी दुनिया वही कर रही है, तो the possibility of you going wrong is high. Then you have something called Bollinger Bands and they are good tools for technicals and support resistance levels are very good. कि सपोर्ट कहाँ है, कहाँ से निफ्टी को सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल विल शो ऑन द, आपको चार्ट्स पे दिखा होगा 16,000, जो अभी जैसे सपोज 700, 16,750, 800 इज गोइंग टू बी अ मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी। तो क्यों? बिकॉज वो अ कपल ऑफ मंथ्स बैक वो लेवल से ही निफ्टी 16,795 से ही करेक्ट होकर मेजर करेक्शन जो निफ्टी में आया था 15,200 के नीचे तक गया था, वो एक लेवल।
आज भी मार्केट जो है वो लेवल 16,800 के ऊपर पार नहीं कर पाया। तो ये लेवल से अब एक बार आपको ध्यान रहेगा और ये आप देखेंगे ना, यू गेट अ बेटर आइडिया क्योंकि मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवट लेवल्स आर आल्सो फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड ऑनेस्टली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स की कोई कमी नहीं है, हंड्रेड्स है इंडिकेटर्स, बट आपको याद रखना है 2-3 इंडिकेटर से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। 2-3 इंडिकेटर को अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड 2 or 3 indicators the best way, and होता है वेरी नाइस थिंग, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा इंडिकेटर भी यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्राइस को ही तो यूज कर रहे हैं ना टू फॉर द आउटपुट। सो दैट्स समथिंग। सो नाउ वी विल कम टू अ स्ट्रेटजी। तो वी लुक एट अ स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी है और उसके कि कैसे आप निफ्टी में यदि ट्रेड करना चाहते हैं तो विल सी कि वेदर इसने आज कुछ ट्रेड दिया है कि नहीं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, this is something I'll repeat both in English and Hindi. Before that, I'll see if there are any questions. Yeah, any questions so far? No. So I hope you all are understanding. You can just, if you all are able to follow me well, just say yes, so I'll just proceed. Yeah. So thank you. So what I'll do now? So now I'll talk about the strategy. So हम लोग एक strategy, I have the strategy, I'll share. I'll also tell you how you can devise your own strategies, how you can check. So we'll look at this. So उसमें भी the most important thing, I'll repeat both in English and Hindi, important points. So this is an important point, so I'm repeating both in English and Hindi. First I'll repeat in English. First of all, you need to understand who is stronger in the market. Is it the bulls are stronger or the bears are stronger? That is something which you first need to know. Because if you don't know whether it is the bulls are stronger or the bears are stronger, you will never know what you have to do. So if you know that the bulls are stronger or the market is in an uptrend, what you should do? Look at buying opportunities where you can buy. So जैसे for example uptrend में market चल रहा है तो आप buying opportunities देखिए, downtrend में market चल रहा है तो आप shorting opportunities कीजिए। अब for example Nifty की बात करूँ तो if you are trading intraday, so first screen you can have a 30-minute chart. कि 30-minute chart पे पहले आप देखेंगे कि what is the trend, and on a 5-minute chart you will define your entry and exit. That is something which you can do. So first so what I'll do, I'll just plot this and then we will see and I'll explain. Just one second. So we have a Nifty 30-minute chart and here I will plot EMA 10, 100 and MACD. Just give me a minute. ये मैं बस plot करता हूँ आपके सामने. So and then I'll explain that. Don't worry, I'll explain it in English and Hindi both for the betterment of everyone. So मैं क्या कर रहा हूँ? What I'm doing here, I'll speak also while I'm putting this on the chart. So what I'm doing here is now I'm plotting some moving averages, and I'm plotting an MACD histogram. So these are my I like these indicators, so I'm using that. It's not that you have to use them also, but you can definitely try them out. They are quite useful. Now what I'll do, I'll plot one more. ये एक सॉफ्टवेयर में यूज करो Falcon 7, तो उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसमें I can have a 2 chart view like this. So I am just using this. तो इसमें मैं निफ्टी ही मैं प्लॉट करता हूँ और इसमें I'll not be using too much of indicators. मैं एक बोलिंजर बैंड है वो यूज करूंगा, तो मैं समझा दूंगा. Just one second, let me plot it. So yeah. So what I have done here is that so now if you see this, अभी क्या है ये निफ्टी का. Now I will explain to you. Now I'll explain in detail. ये मैंने निफ्टी का I'll explain both in English and Hindi. What I have done, first I'll explain in English. What I have done here is that you can see that this is a 30-minute chart of Nifty which I am looking at, correct?
Now I'll see, okay, what I have done, I have plotted a 10-period exponential moving average. ये exponential moving average 10 period जो है ना, वो best short term trend indicator period. मतलब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड जानना है किसी भी टाइम फ्रेम में, आप इसको अप्लाई कर दीजिए. डेली पे, वीकली पे, आवरली पे, किसी भी टाइम फ्रेम में इट विल गिव यू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मूविंग एवरेज इज द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज. तो ये आपने प्लॉट किया, तो ये क्या है, स्लोपिंग अपवर्ड्स है. ये कभी कभी बीच में क्या होता है ऐसे, मतलब बट यू सी हियर once it has started sloping up, it is sloping up only. That means the Nifty trend is up even in the short term. This is the long term. तो मैं 30 मिनट्स पे मैंने 100 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है कि ये कैसा चल रहा है. ये भी स्लोपिंग अपवर्ड्स है. और मैंने एक और MACD हिस्टोग्राम इसे कहते हैं 12-26-9 एक्सपोनेंशियल. These are the parameters, default parameters भी यही है 12-26-9. आप इसको यूज कीजिए. तो ये क्या आपको बताता है कि स्ट्रॉन्ग है मार्केट की नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, एंड इट इज दिस इज द जीरो लाइन, इसके ऊपर ये सब पॉजिटिव बार्स है, इसके नीचे सब नेगेटिव बार्स. यदि बार्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ना, सो दैट मींस इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि थोड़ा सा निफ्टी में ना वो ये थकान सी आ गई. बिकॉज इफ यू सी हियर in one of my earlier webinars I was talking about bearish divergence. तो ये मुझे 30 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, यहाँ एक टॉप बना है, ये प्राइस हाई है, फिर ये एक है प्राइस हाई है, और ये है. तो उसके बाद और तो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट ये इंडिकेटर का टॉप जो है वो कम. सो दिस इज बेरिश डाइवर्जेंस. लेकिन स्टिल द बेनिफिट ऑफ डाउट इज फॉर निफ्टी द ट्रेंड इज अप. तो आपको 30 मिनट्स पे देख के क्लियर हो गया कि ट्रेंड अप है. अब सवाल उठता है कि okay, I was explaining in English, so I'll explain English and then I'll come to Hindi. So what I'm seeing here is that using this MACD also, it's positive, and it's like, and the 100 period is also positive, it's sloping upwards, and this is also. So that means that I should look at buying opportunities in Nifty period. And the next question comes is, how do I get buying opportunity? So there what you can do, you can use a 5-minute chart. So first of all, you have to understand whether the bulls are strong or the bears are strong. So this 30-minute chart will tell you now the bulls are strong, so I should be on the bull side. Okay. Now the 5 minutes, okay, now I'll say, okay, the 5 minutes are what I should do for entry. So 5 minutes में what you can do, you can plot this Bollinger Band. So ये Bollinger Band क्या है? There's a person by the name of John Bollinger. John Bollinger नाम के एक, there's this all developed by Americans. So John Bollinger, he developed this band. So ये band, what this band does is that it is a volatility band. So it uses a default parameter of 20 and the standard deviation it uses 2. So what it means is कि 95% of the prices are within the band. So 95% जो prices है ना, वो इस band के, इसको upper band बोलते हैं, lower band. तो upper band और lower band के अंदर रहता है. तो आपको, तो when you have to act, next question comes is when the price moves below the band. ये जो price closes below the band and then closes inside the band, that is the time to act. Now for example, if you see here, we'll take from here. So like for example, here we are seeing that the trend is changing, and from Monday onwards, that is Monday, Tuesday. So from Monday onwards, we are clear that the trend is up. So I should look at buying opportunity. So we'll go and see what has happened from. So this is what Thursday, then this is Tuesday, and this is Monday. Okay. So this is Monday. So this is the first day. It has opened with a down gap. So here what we are seeing, we did not get, ये lower band को तो touch किया है, उसके नीचे गया, but it has not closed below the lower band. So effectively, it means is that maybe this could be a one opportunity, and then see where the market has moved. Here what has happened, again it has gone below but did not close, and then it has rallied. But here you got one opportunity on Tuesday. When this close, ये भी नीचे close किया, ये भी नीचे close किया, and you see, so what happens is, जब ये 5 minutes पे Nifty is closing below the lower band, and then it closes inside the band, lower band. You can see this red candle is below this lower band, this red candle is low, this is inside the lower band. And when the high of this is breached, you can look at a buying opportunity. So you're not getting a trade on Monday, but you're getting a trade on Tuesday, and this would have made good money for you. And then again, you got a trade here. If you see, you got a trade here on this one.
Wednesday. But here, I doubt you would have made money on this trade because from 16,540 it went to 16,560, so 30%. So you would have been stopped out. And then again, this is one trade if you see here. So here it has closed below, it barely managed to close inside. Then here it closed inside. Then again, if you would have entered, you would have had a stop loss here if your stop loss was below this. But then again, you got a next trade here. This was an excellent trade. If you see, this is an excellent trade here. Closed outside, closed inside, and then you see. तो उसमें what you can do ना कि थोड़ा सा Japanese candlesticks को थोड़ा सा study कर लीजिए, 2-3 patterns. They will tremendously help you. तो आप ये सब ट्रेड नहीं लेते because ये जो है ना, इसे piercing pattern बोलते हैं Japanese candlesticks. तो ये बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज करके अंदर क्लोज कर रही है क्या, मोर और लेस इट्स अ पियर्सिंग पैटर्न. इसका हाई टूटा, तो दैट वाज थर्सडे, दैट इज यस्टरडे. यू वुड हैव गॉट दिस ट्रेड अराउंड 2 o'clock. यदि आप वीकली एक्सपायरी में लेते देन आल्सो वुड हैव मेड गुड मनी. इफ यू वुड हैव हेल्ड ऑन टू योर पोजीशन, तो भी आज आपको यहाँ निकलने का वो मौका देता. तो इसके अपर बैंड के बाहर जब क्लोज करा और अंदर क्लोज करा, दैट इज अ प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी. तो ये एक स्ट्रेटजी ना, फॉर एग्जांपल we'll just apply it on bank nifty. Now if you see, this is bank nifty. So bank nifty also you'll find that you got this opportunity. इसमें तो buy दिया भी नहीं था, इधर it just came down and then it came here. You got one buy here. Here you got one buy, so that you got stopped out. And then this was on Tuesday, and this was on Monday. तो आपको Tuesday निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी में नहीं मिला. बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेड मिला, ये वाला, तो यू वुड हैव बीन स्टॉप्ड आउट हियर एंड देन यू गॉट अ वेरी गुड ट्रेड हियर. एंड देन दिस इज 2 days. तो ये फ्राइडे में क्या, इट वाज ऑल शैलो हियर. तो इसमें क्या होता है, द बैंड एक्सपैंड्स एंड कोलैप्सेस. तो आपको पता चलेगा कि जब ये नैरो हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट विल नाउ ट्राई टू टेक सम डायरेक्शन. So this is one strategy which you can use. तो इससे क्या, at least you will not go wrong. जब trend up चल रहा है, तो why you want to take a risk? Now you'll say, oh no, I don't want to trade on a 5-minute chart. I don't want to trade on a entry and exit 5 minutes पे नहीं लेना चाहता. Okay, so what you can do, ये 30 minutes को you can make it 60 minutes for your trend identification. Okay, trend क्या है, मैं 60 minutes का लगा देता हूँ, और ये जो 5 minutes है, इसको आप 15 minutes कर दो. इसको आप 15 मिनट्स कर दो, या इसको आप इफेक्टिवली यदि 10 मिनट्स भी कर सकते हो, या 15 मिनट्स इज आल्सो फाइन. तो 15 मिनट्स कर दो, तो आपको एक ट्रेड समवेयर हियर यू वुड हैव गॉट दिस ट्रेड, और आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिला, क्योंकि इस पे वो मार्केट इतना स्ट्रांग रहा, ये भी यू गॉट ओनली वन ट्रेड हियर. इफ यू मिस दैट ट्रेड, यू वुड नॉट हैव मेड मनी. सो दिस इज द ब्यूटी. नाउ यू वांट टू से, आई डोंट वांट टू ट्रेड ऑन अ 60, आई वांट टू लुक एट डेली ट्रेंड. तो डेली में इफ यू लुक, so just one second. Yeah. So this is a daily trend. So daily में you see this 10 period exponential is up only. So trend up ही चल रहा है, तो आपको buying opportunity ही देखना है. So that's something which you can definitely use. So you can now use a 30-minute chart for here, and then you will get this. But I was saying, because we are talking about how to trade Nifty successfully, you can use a 5-minute and a 30-minute. That is good enough. तो ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड अच्छे तरीके से बता देगा. एंड यू हैव दिस. तो इसको मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि क्या ट्रेंड है. कभी भी याद रखना है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम ना, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं, तो वो आपको डेली जरूरी नहीं है सिग्नल देगा, वो कभी कभी देगा. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली योर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना है मार्केट में. तो उसके लिए जरूरी नहीं है ना आपको एवरीडे ही करने की जरूरत. जब आपको एज आपके फेवर में मार्केट चल रहा है, आपको मार्केट बेहतर समझ में आ रहा है, देन यू एंटर, बिकॉज इट इज योर मनी. सो दिस इज वन स्ट्रेटजी यू कैन डेफिनेटली लुक एट, बिकॉज ये क्या करता है, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है. और आपको जब ये अभी ये सब पीरियड में ना, बहुत लोग शॉर्ट करके चलेंगे, अरे शॉर्ट कर दो, बहुत ऊपर चला गया, शॉर्ट कर दो, ऊपर चल गया. बट ये तो आपको क्लियरली बता रहा है कि ट्रेंड आप है शॉर्ट टर्म में, व्हाई शुड आई गो शॉर्ट, आई शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी. So that's something which you should definitely keep in your mind. So now I'll just take a pause and see if there are any questions. And acha, okay. Yeah.
Okay, so I will. Yeah. तो घनश्याम जी मैं अब थोड़ा सा धीरे धीरे बात करूंगा. Just was in a flow, so I just yeah. Can we have on web trading? Yeah. All these ना जो भी indicators में plot करता हूँ अपने Angel Bro के mobile application में और इसके अलावा web में, because we have trading view charting हम लोग provide करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आप आराम से उसमें सब कुछ और भी और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर भी मतलब इंडिकेटर्स भी हैं, बट देयर इज समथिंग दैट यू कैन कीप इट सिंपल. आप जितना सिंपल रखें उतना बेटर है, बिकॉज यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो दिस अ क्वेश्चन की बोलिंजर बैंड को जरा रिपीट करने, तो आई रिपीट दिस इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो बोलिंजर बैंड्स का क्या है, देयर फंक्शन इज दैट दे आर बैंड्स व्हिच हैज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो दे आर कॉल्ड वोलेटिलिटी बैंड्स. So जब market is very volatile, then the band is, you can see here, it is expands. When the market is not volatile, here you are seeing is the band contracts. तो ये जो है यहाँ here you see the band has contracted. तो इसमें क्या होता है, excuse me, Bollinger Bands में that 95% of the prices ना they are inside the band. तो action time तब होता है when they are outside the band. तो जब वो बैंड के बाहर है तब आप एक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये 10 मिनट्स के चार्ट पे है, तो यहाँ और आपको जो भी बैंड के अंदर हो रहा है उसका हाई टूटने देना है तब, या फिर शॉर्ट में करना है तो उसका लो टूटने देना है, बट यू आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट हियर. व्हाई? जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंड के बाहर क्लोज किया और ये बैंड के अंदर क्लोज किया, तो दिस कैन बी अ शॉर्टिंग. नो, यू विल नॉट शॉर्ट. व्हाई? बिकॉज यू आर सीइंग कि अरे 30 मिनट्स पे तो द ट्रेंड इज अप. That means it is not asking me to short. Yeah, I'm looking at a 10-minute chart. Even if you look at a 5-minute chart, it is the same thing. So कुछ लोग क्या करेंगे, they'll go against the trend and they'll go short. Maybe they'll make some money, but again, if they would not have exited, वो stop loss फिर आगे चल के trigger करते हैं. So Bollinger Bands are very good for entry and exit. So this is something you should definitely look at and how to use it even better. तो वो काफी आपको help कर सकता है in your entry, defining your entry and exits. So that's something. Now I will come to support resistance का जो मैंने एक बात कहा था. ये this is Nifty. Okay. Now you see we are looking at a Nifty daily chart. So if I see this is on 3rd June. So 3rd June को Nifty had made a high of 16,793. Okay. And today's high was 16,752. So effectively what it means is ये जो 16,793 और 800 will become very crucial रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. तो निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी हैज अ चांस ऑफ गोइंग हायर. सो इफ यू लुक एट अ वीकली, नाउ विल जस्ट लुक एट अ वीकली चार्ट फॉर दिस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई से. तो ये देखिए सिंगल मूविंग एवरेज 100 है, वहीं निफ्टी ने इस बार भी सपोर्ट लिया और फिर इस बार सपोर्ट लेके वहीं से निफ्टी हैज टर्न्ड अराउंड. तो व्हेन यू आर, so this is from a trading from a, I would say more, ये intraday trading नहीं है because अभी weekly chart देख के intraday trade नहीं कर सकते, but for your understanding. तो आपने जैसे इधर देखा और आप डेली पे आते हैं तो आपको मालूम है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें I will just or here I will be better. मैंने डेली चार्ट किया, देखिए जैसे द ब्यूटी ऑफ बोलिंजर बैंड, ये क्लोज किया. ओके, ये क्लोज किया, बाहर क्लोज किया, दिस क्लोज इनसाइड. ओके, बट इस कैंडल का बाहर का हाई वैसे टूटा नहीं, मोर और लेस इट वाज द सेम हाई. दिस वाज रफली द सेम हाई, डिसाइसिवली टूटा नहीं. फिर वो नीचे एक मेजर करेक्शन आया, फिर इट क्लोज इनसाइड एंड देन देयर वाज दिस गैप अप एंड देन साइडवेज. सो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैंड क्लोज. इसके बाहर क्लोज किया, अपर बैंड के बाहर क्लोज किया, अंदर क्लोज किया, देयर वाज एन इमीडिएट शार्प करेक्शन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज क्लोज्ड outside the band, but last 3 days it is closing outside the band. मतलब this is showing strength. क्योंकि जब outside the band close करता है उसके बाद generally इसी here outside the band close किया, inside close किया, major correction is following. Outside the band close किया, inside किया, we have seen. So but you have to look at from, so technical indicators का the best part is that they work across time frames. ऐसा नहीं है कि they'll work on a daily chart, they'll not work on a hourly chart, they'll not work on a 15-minute or a 5. इंडेक्स में यू कैन ट्रेड ऑन अ 5-minute चार्ट एज वेल, शॉर्ट टर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आई आल्सो यूज अ 3-minute चार्ट. सो मैं 3 मिनट भी यूज करता हूँ क्योंकि कभी इंट्राडे में ना आपको 3 मिनट्स पे भी ट्रेड मिलता है. तो आज आप देखिए तो निफ्टी में
अभी जैसे मैं 30 मिनट्स का लगाता हूँ उसको, जस्ट शो दिस. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ 30 मिनट चार्ट. तो 30 मिनट इज क्लियरली टेलिंग मी दैट द ट्रेंड इज अप. इसको आप उतना ज्यादा वेटेज एमएसीडी को मत दीजिए. मोर वेटेज यू शुड गिव टू द 10 पीरियड ईएमए का स्लोप. वो स्लोप अप है और ये अप है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रहे तो और अच्छी बात है, बट यू हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू दिस. So here I am seeing the trend is up. Now just see. So this is what आज today 10:44 5 minutes पे मुझे नहीं मिला. So 5 minutes पे it did not come to this level, but 3 minutes पे it has come to this level. So now I am looking at 10:44. तो अभी Nifty was around 16,600. तो मैं suppose 16,650 का जो मतलब slightly out of money है कॉल, वो देखता हूँ. तो वो ये रहा. वो भी बैलिंजर बैंड के बाहर क्लोज करके अंदर क्लोज किया. तो दिस वाज अराउंड 115. तो 115 वाला ऑलमोस्ट 190 तक गया. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. तो इसके नीचे का छोटा स्टॉप लगा के यू कैन टेक अ पोजीशन एंड यू कैन गेट आउट हियर आल्सो, यू कैन गेट आउट हियर आल्सो. यू वुड हैव मेड गुड मनी. तो द की इज पेशेंस. बट ये 3 मिनट्स में मैंने क्या देखा है कि इसमें आपको सिग्नल भी मिलता है, बट ज्यादा सिग्नल्स मिलने लगते हैं. तो इसीलिए प्रेफर a 5 minute chart. So that's a better. ये वाला ट्रेड भले आप यहाँ इधर देख सकते थे जब वो लोअर बैंड को टच करके ये अच्छा. फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन दिस. दिस इज व्हाट अ मॉर्निंग स्टार डोजी, जापानीज कैंडलस्टिक्स में से मॉर्निंग स्टार डोजी बोलते हैं. एक करेक्शन हुआ, मॉर्निंग स्टार डोजी हुआ, लोअर बैंड को टच किया, अपर ट्रेंड है, इसका हाई टूटा तो आप एक बाय करके फॉर एग्जांपल निफ्टी पे आए तो ये रहा. तो ये ऑलमोस्ट लोअर बैंड को टच किया है. ये मॉर्निंग स्टार एक बना है करेक्शन के बाद. सो हियर इसका हाई टूटा तो दिस कुड हैव बीन अ बाइंग ऑप्शन. तो जापानीज कैंडलस्टिक्स के ना उस पे भी देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर दैट एंजल वन वी हैव कम आउट विद अ सीरीज कॉल्ड मार्केट यात्रा ऑन अ YouTube चैनल. तो उसमें क्या हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस और इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग पे मैं खुद ही उस पे आई एम द स्पीकर एंड वी आर क्रिएटिंग वीडियोस ऑन दैट. तो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो आप वहां भी जाके ना सीख सकते हैं. स्मॉल वीडियोस बट दे आर वेरी यूजफुल एंड यू लर्न अ लॉट एंड कंटिन्यूअस विल कीप ऑन हैविंग वीडियोस ऑफ दैट. तो वहां भी जाके आप सीख सकते हैं. इन माय नेम यू कैन सर्च, तो यू विल गेट ऑल दोस वीडियोस देयर. तो ये अभी क्या आपने 5 मिनट पे देखा तो जापानीज कैंडलस्टिक्स पे दिस इज अ बुलिश और अ मॉर्निंग स्टार, यू कैन से मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्मेशन मोर और लेस, और एक हैमर भी है. तो ये तो आप इधर ले सकते थे. तो निफ्टी में हम लोगों ने देखा अभी सपोज वही जो मैं बोल रहा था वो सही कि विल सी 16,650 निफ्टी या कॉल ऑप्शन. सो दिस वाज दिस ट्रेड हियर. तो हियर यू वुड हैव बॉट एट 130 135. स्टॉप लॉस इज बिलो 120. दिस लो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही है और वहां से यू मेड अ गुड मूव. तो ये सब थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट रन आफ्टर द मार्केट. बिकॉज जहां आप क्या है जैसे इधर बढ़ रहा है, आपने सब कुछ इधर खरीद लिया करके, यू आर लकी, वुड हैव मेड गुड मनी. पर जैसे आज क्या हुआ सुबह फर्स्ट 15 मिनट्स में, जो मैंने बोला फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे, सी व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे. हाई बना, किसी ने यहाँ खरीदा, वहां से पूरा करेक्ट कर दिया, वो अटक गया क्योंकि 150 का जो ऑप्शन था वो 100 ऑलमोस्ट 110 तक आ गया. तो he would have exited somewhere and then again it has gone up and went higher. So don't be in a hurry. Don't be in a hurry to enter. See, this is what I was saying. First 15 minutes, 1, 2, 3 निफ्टी का हाई बनाया, लोग यहाँ अटके, मार्केट करेक्ट किया. So if the trend is a wait for a buying opportunity. No, I have to catch the high of the day. I have to buy at first 916 only. Don't do all that. That is, you have to understand कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स रहते हैं ना, they never go and enter in the first 15 minutes of the day to build positions. They might come to change or sway the people. So मतलब even if they have to make the market, so the market has to correct, so it will open up with आप क्या trap people and then start correcting. Many day we will find. I'll just show you. अभी हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हियर. सो ये फर्स्ट 15 मिनट्स में ऊपर गैप अप किया और ऑलमोस्ट वहीं चला. उसके बाद द लो ऑफ द डे, ये तो थोड़ा सा ऊपर गया. दिस अगेन वाज अ ट्रैप. This again, just see this. This again was a trap. First 15 minutes like this and trap. First 15 minutes like this, then sideways and then again trap.
So never trade in a hurry. Don't be in a hurry to trade. So I think I will just stop here and see if there are any questions. Yeah, can we have on the live market? Yeah, we can do that right now. We देखते हैं ना. तो Bollinger Band I've explained how to draw these trend lines. You don't have to draw them; they will get plotted, Harish. आप इसको automatically plot कर सकते हैं. As per what's maximum probability for Nifty for next day? Any BTST setup? Okay, we look at that as well. Market में and sir, when Bollinger Band goes narrow means that market is sideways. The market is consolidating. When the band expands, that means the market has taken a direction. This is Bollinger Band, the software which I'm using called Falcon 7. But all these tools, they are means all these indicators are available in the Angel mobile application as well as in a web-based application. So there was one question: can we look at the live market? So why not? Let us look at rupee. Okay. So rupee market is open till 5, or we can look at crude oil. So let us look at crude oil. So we look at a crude oil market. So what we'll do, we will look at a 60-minute chart of crude oil, and or let us see crude oil. So we look at a daily chart of crude oil, and we'll look at a 60-minute. Just let me see if we can find something in currency on a 30-minute short term, because currency markets are also very good. Yeah. So now if you see, this is currency. Okay. We are looking at a 30-minute chart. ये भी live market है till 5 चलेगा, so we have this currency market. So now if you see, what is this telling me? This is telling me that the currency market is now completely flat, because it is ये simple SMA 100 simple moving average जो 100 है उसके नीचे चल रहा है. जो 10 period exponential है, that is more or less flat, and this MACD which was earlier negative, now that is positive. So effectively it is telling me that currency will most likely fluctuate between 79, 80 and 80, मतलब 20 पैसे के रेंज में ट्रेड करेगा. ये you see this move. इसमें क्या, you have to just see that the slope is up and this is up and this is up. So all buying opportunities on a 5-minute chart. So if you see, this is which day? This is since yesterday. So 2 days back, if we go and see. Yeah. So 2 days back, if we go and see, so this was one currency, very good trade here. ये क्या है? This is called a hammer. It's a very powerful and goes below this. Trend up है, तो this could have been a very good buying opportunity. So live market में जैसे for example gold है. Let us look at gold. Can we find something? Or crude is even this. So we look at a. So let us look at crude oil. So crude oil we are looking at a 30-minute chart. तो 30 minutes में crude oil क्या मुझे बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है 100 period SMA is down and the 10 period is up, and this MACD is also positive, here it is turning negative. So ये 10 minutes का है, ये 30 minutes का है. So you look at the 30 minutes is more or less mixed. तो ये clear cut आपको ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं बता रहा है. अभी for example ये look at yesterday 21st July. So this was around 12 in the morning. So let us just go back. Now see this here. This is a beauty. Here, this is what. This was 12 yesterday. So we are looking at a 30-minute chart. Trend down है. इसके नीचे close कर रहा है. Trend down है. 10 period down है. Sloping down है. तो ये करीब यहाँ है. ये भी हल्का सा negative चल रहा है. तो benefit of doubt मतलब I can look at shorting opportunity. तो कल दोपहर में somewhere around 11:24 and this somewhere around here this time you are getting a shorting opportunity 79-60 के आसपास. थोड़ा सा ऊपर गया, but if you would have had a good stop loss, so it would not have got triggered. अब 20 रुपए. उसके बाद just see the way crude oil has corrected. Almost 300 points the crude oil, 400 points the crude oil has corrected yesterday during the day. 400 point का correction हो. So the best part is that these are indicators. They work across asset classes. Technicals, only one thing which you need to remember: don't apply in any Tom, Dick, and Harry stock.
कोई स्टॉक जिसका नाम भी नहीं सुना, जिसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ही शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसमें टेक्निकल्स काम नहीं करेगा. Technicals works best where there is massive liquidity, where there are many participants, large number of participants. There, technicals works even better. So hope you all had some good understanding today. And yeah, this meeting will be shared with you. 5 minutes is good. I would say I sometimes get excited to look at 3 minutes also, Rohit, but 3 minutes sometimes catches you more on the wrong side. 5 minutes give you less signals, but they are better. Price action के opposite direction strategy indicate करे तो there you can always look at the trend. So if the trend is supporting your trade, that is a better option. That's something. And someone asked about, so the last question was, what is it telling about tomorrow? कल के बारे में क्या बता रहा है? So if we look at Nifty, so we are looking at a 30-minute chart in traffic. So clearly it is telling me that the trend is up, but here what I am seeing is that Nifty is making highs, but the indicator is not making fresh highs. Indicator is a bearish divergence, so I will be slightly cautious on Nifty. But I will still give the benefit of doubt. मतलब यदि मुझे suppose कल tomorrow Nifty comes down and if I get some good buying opportunity on a 5-minute chart, Bollinger Bands, and I see something, then maybe I'll look at that. Till the time I don't see a trend change. So you have to understand, try to flow with the trend. Try to be with the stronger party. Means यदि bull strong है तो why you want to be a bear? And when the bears are strong, be a bear. Don't be fixated in I have to be bullish all the time, I have to be bearish all the time. No. If the market is bullish, be bullish. When the market is bearish, be bearish. You should go with the flow of the market. So with that, I will end here. And I hope you all had some good learnings. So as I said, हमारे YouTube channel पे ना Angel One के मेरे नाम से आप search भी करेंगे, Amardev Singh, so you'll find a lot of videos, and we are now creating some very good videos on pura technical analysis. So it will be coming in slowly because we are working hard.